आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लाए फूड केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदा 50 क्वेश्चंस, जिसमें प्रीवियस ईयर है, आप इसको पढ़िए और खुद भी आंसर लगाने का ट्राई करिए और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूरेनोज इज रिंग स्ट्रक्चर्ड विद, आंसर इज ए 5 मेंबर। पायरेनोज इज रिंग स्ट्रक्चर्ड विद, आंसर इज सी 6 मेंबर। आंसर नंबर 3, in D series highest numbered a symmetric carbon has OH group directed towards, answer is B, right. In L series highest numbered a symmetric carbon has OH group directed towards, answer is A, left. Most important monosaccharides in biological system is, answer is B, glucose. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पर सेम हो गए, तो उसके लिए आप 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एट रूम टेम्परेचर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन, आंसर इज डी, 4 टोमेरिक फॉर्म। Naturally occurring sugars are mostly, answer is B, hexoses. 9, milk contain how much percent total sugar about, answer is B, 4.9. honey contains how much percent total sugar about, answer is A, 82. sweet corn contains total sugar of how much percent about, answer is D, 22. Okay, तो next question number 12, potato contains total sugar how much percent about, answer is C, 17. 13, apple contains total sugar how much percent about, answer is B, 14.5. Question number 14, grape contain total sugar how much percent about, answer is B, 17.3. Question number 15, carrot contain total sugar how much percent about, answer is A. Question number 16, sweet potato contains total sugar how much percent about, answer is A, 25. Question number 17, maple syrup contain total sugar percent about, answer is C. Question number 18, glycosides are stable too, answer is C. क्वेश्चन नंबर 19, बनाना कंटेन्स xylitol डैश ब्रैकेट में ड्राई वेट का, आंसर इज बी, 21. पीयर्स कंटेन सॉर्बिटॉल, आंसर इज सी. रास्पबेरीज कंटेन xylitol, आंसर इज बी. स्ट्रॉबेरीज कंटेन xylitol, आंसर इज सी. पीचेस कंटेन सॉर्बिटॉल, आंसर इज सी. 24, कॉलीफ्लावर कंटेन्स xylitol, आंसर इज सी. White mushrooms contain mannitol, answer is C. White mushrooms contain xylitol, answer is B. White mushrooms contain galactitol, answer is A. Oligosaccharides contain monosaccharide, units of about, answer is B. Number 29, sucrose is dash in nature, answer is B, non-reducing. Caramel is formed when sugar is heated at which temperature, answer is B, 200. Which of the following is not an oligosaccharide, answer is B, galactose. Hydrolysis of sucrose results in formation of equal quantities of D-glucose and, answer is B, D-fructose. Specific rotation of sucrose is, answer is A. Specific rotation of D-glucose is, I think ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। वहाँ पे हमसे पूछा था सुक्रोज के बारे में और यहाँ पे क्या पूछा है, डी ग्लूकोज के बारे में। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज, आंसर इज सी. स्टेलिंग ऑफ ब्रेड इज रिलेटेड टू, आंसर इज बी. Dash is known as milk sugar, answer is B. Average lactose content how much percent in cow milk is about, answer is A. Average lactose content how much percent in human milk is about, answer is B. Lactose is hydrolyzed by, answer is B. 40, maltose is dash disaccharide, answer is A, reducing. Cellulobiose is dash disaccharide, answer is A. Raffinose and stachyose from legumes are responsible for, answer is B. Fructo-oligosaccharides are commercially manufactured by dash enzyme on sucrose, answer is B. The rate of Mueller rotation increases how much percent times for every 10 degrees Celsius rise in temperature, answer is A. Question number 45, formation of caramel can be considered non-enzymatic browning reaction in absence of B and compound. Question number 46, the pigment caramel taste is, answer is C, bitter. Question number 47, melting point of caramel is, answer is C, 138. Question number 48, heating of caramellin results in formation of, answer number B, caramellin. Question number 49, melting point of caramellin is, answer is A. Question number 50, caramellin is also known as, question number 50 का आंसर है C, human. Question number 51, in commercial production crystallization of sugar is an important step for, answer is B. Question number 52, which of the following affects growth of sucrose crystals, answer is D. ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसे ही और इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को दबा दें और फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार दें बहुत सारा और अपना ख्याल रखें। ठीक है, बाय बाय।